Welcome back to my channel, and I know I am posting this video after a long time because मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं. So obviously अब मैं वीडियो बहुत रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं पहले करता था. whenever I get time and मैं छोटी मोटी वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा बीच बीच में ताकि मैं चैनल कम से कम डेड ना रहे. So हम अपने ESC को AFBL Heli S ESC, this one, like my firmware is this, and I'm going to flash it to BlueJ. And let me tell you, I've already flashed. So मैं आपको बस इसके steps के through guide करूँगा how you can do it. If you already have BL Heli 32, so you don't need to flash it because BL Heli 32 already has its own application from where you can set up the configuration, chain configuration, and there are so many options. Same with BlueJ. So we are gonna flash it to BlueJ. So let me connect my drone first. Also you need to have your battery beside you because then only you will be able to do it. So I'll connect my drone. It will detect. Okay, it has detected. Now we will connect, and from here you can check nimble motor control and then check if your motors are working. So I'm now going to plug in my drone. So you will hear some kind of music because after I have flashed to BlueJ, it has given me option to edit melody like this. See, now it's also showing battery voltage. Now we will click on this. You have to connect your battery first, then click on read settings, then only you can connect. You won't see this much on BL Heli. You need to flash the firmware. So first of all, I'll just tell you what you need to do first. Go here. Now you will be on BL Heli. Select to BlueJ. Then don't change anything from it. Never change anything. Select version. You should go with the 19.2. Then frequency. I have 5-inch drone, so I will go with 24. But if you're using 3-inch, 2.5-inch or 2-inch, you have to go with 48 kilohertz frequency. And if you have tiny whoop, then you go with 96. So yeah, for my drone it is 5-inch, so I'm gonna go with the 24 as I said. And for around 3-inch you can go for 48 and 96 for tiny whoops. Other thing is you have to go for 96 for a tiny whoop, like you must go for it. Also it significantly increases the flight time. And also let me tell you, the higher the PWM frequency is, the smoother will be the motors. But the thing is, if you are like mine, it's a 5-inch. If I put it to 48 or even 98, the thing will happen is the control will decrease. Like it will make the quad handle much worse. So you have to go with 24 if you are 5-inch or higher. Then flash. I'm not gonna flash it. Then it will take a few minutes. It will go through flashing by through each ESC. Then you will see that BlueJ and this kilohertz. Now the main thing I want to show is open melody editor. Click on this and you will see the melody. So the thing you see here is a language of ringtone text transfer language. So इस लैंग्वेज में ये होता है कि एक मेलोडी होती है. सो आप देख सकते हैं लाइक आई हैव चूज्ड, आई डोंट नो, दिस वन, but let me tell you the default one. So default one is this, play. This one is the default. You can go with any one, like play all. So like that. And for it you have to click on accept for all ESC, then click on write melody. तो मैं इस पे प्ले करूँगा, देखने को अच्छा लग रहा है. Then I click on accept, then write melody,
and then I will disconnect. And after disconnecting, you will be able to hear the whatever the melody were heard. बट जब उसको वो करोगे फ्लैश, तो आपको लाइक डायरेक्टली आप स्टेज पर आओगे, बट यू वोंट बी एबल टू सी दिस ऑप्शन, सो यू हैव टू डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट अगेन, सो you will see this option then. And then after, there are some extra configuration parameters, but I won't be talking about them. ऑल्सो मैंने जब मोटर इसको जब AC को फ्लैश किया तो सारी इसका वो उल्टा हो गया था, तो फिर मैं बीटा फैट में गया, देन आई रिवर्स्ड मोटर्स बिकॉज सभी उल्टा चलती थी, लाइक नॉट इन द सेम डायरेक्शन बट सब अपनी जो रिस्पेक्टिव जो डायरेक्शन होती है उससे उल्टा घूम रही, तो आई वेंट एंड क्लिक ऑन रिवर्स मोटर डायरेक्शन, बट तब भी वो सेम प्रॉब्लम रही, सो देन आई हैव टू गो विद द मोटर डायरेक्शन ऑप्शन, सो मैंने इंडिविजुअल चेंज किया. एंड यू कैन ऑल्सो चेक द मोटर डायरेक्शन, बट अगर आप बीटा फैट में नहीं सीधे इधर ही करना है, तो यू कैन क्लिक रिवर्स और फॉरवर्ड, ओके, नॉर्मल और रिवर्स्ड. आपको बस रिवर्स पे क्लिक कर देना, तो आपके वो जो रिस्टोर हो जाएगा. जैसे पहले कुछ था तो ठीक था, अब वो बाद में ख़राब हो गया, लाइक वो उल्टा हो गया, नॉट ख़राब हो गया. सो आपको बस नॉर्मल पे क्लिक कर देना है. ऐसे मेरी रिवर्स थी तो मैं नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा, तो वापस वो ठीक डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाएगी. बट मैं बीटा फैट से कर था, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको. सो आपको यही करना है. जब भी आपको कुछ अगर सेटिंग्स चेंज करनी है, सो हैव टू डू वट एवर यू वांट एंड राइट सेटिंग्स and you will be able to see the changes. So thank you guys for watching. Bye bye.